Good morning, parents. I am your math teacher, Lakhan Kumar. Today we will discuss about the triangles and its property. Okay. Triangles में सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि what are triangles? What are triangles? So let me have to discuss. Triangle. Triangle is a three-sided closed figure. Three-sided closed figure. Okay, and it has three vertices A, B, and C. It has three vertices A, B, C. Okay, and three angles 1, 2, and 3. 1, 2, and 3. Okay, triangle is a three-sided closed figure with three vertices A, B, and C, and three angles 1, 2, and 3. Clear? So, how we can imagine that this figure can be present in your daily life? तो इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल है whenever you see the towers, the big towers that use for the electricity transmission, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो मोबाइल कंपनीज जो यूज करती है टावर्स को, तो whenever see the shape of that tower and it has many angles and the shape between these angles is a triangle. Okay, is a triangle. Clear? Next one is a triangle. Next one, type of triangles. Types of triangles. Okay, types of triangle has two bases. One is based on the angle, and second is based on the sides. So first of all, we have to read about the types of triangle on the basis of sides. Okay, based on sides, equilateral triangle is a first type. Okay, based on sides, it has three types. Okay, based on sides, it has three types, and first is equilateral triangle. And the simple definition is all the three sides are equal. जैसे कि इसके नेम में है equilateral triangle, that means the all sides are equal. It has three sides, so three sides are equal. Clear? Next one. It is the example of this type of triangle that is based on the side. First type is equilateral triangle. It is a equilateral triangle which has all sides are equal with each other. देखो स्टूडेंट्स, जब भी हम ऐसा ट्रायंगल यूज करके और ये सिंगल लाइंस जब मैच करेंगे, तो देखो सिंगल लाइन मैंने लगाया, सभी पे सेम लगाया, तो इसका मतलब these sides are equal. जब भी हम इक्वल शो करने के लिए हम करेंगे तो हम ऐसे लाइंस को शो कर देंगे. ओके, एंड these three sides are equal. क्लियर? तो ऐसे हमारे पास जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा उसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी. अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5 होगी. ओके, क्लियर? नेक्स्ट वन इज isoscale triangle. Okay, and the simple definition is any two sides are equal. Okay, first is equilateral triangle which has all sides are equal, and second is isoscale triangle and it has any two sides are equal. मतलब कोई भी दो साइड इसकी क्या होगी, equal. Okay, for example, if we draw this triangle, then it has two equal sides. One is this and second is this, and this is the non-equal side. Okay, it means if it is 4 centimeter, then it is also 4 centimeter, and it can be a different measurement. Okay, तो ये 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, या 3 हो सकता है, बट ये दोनों सेम होंगे. क्लियर? तो इसमें तीनों साइड्स इक्वल थी, तीनों सेम होंगे, और इसमें दो इक्वल होंगे, कोई भी दो इक्वल हो सकते हैं. these two can be equal, and these two can be equal. Clear? Next one is scaling triangle. Clear? First is equilateral triangle, second is isosceles triangle, and third is
स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल में क्या होगा, देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगा सकते हो, उसको देख सकते हो कि ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। फर्स्ट में था इक्विलेटरल, सेकंड आइसोस्सेलेस में क्या था, टू साइड्स आर इक्वल। अब क्या बचता है, स्केलिन में कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। इफ द ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर of different measurement, then it can be a scalene triangle. Okay, scalene triangle. No two sides are equal. No two sides are equal. अगर दो साइड कोई भी इक्वल नहीं होगी तो इसका मतलब तीनों साइड क्या होगी, अलग अलग होगी। देखो ये है हमारे पास, तो इसमें देखो 1 2 and 3 and 3 sides are of different measurement. If it is 3, it is 4, it is 5, that means the all measurements are different and the all measurements are different. Clear? Next one. Next one, based on the angle. मैंने बोला ही था स्टार्टिंग में, triangles has two bases for the types. These are one of based on the sides and second based on the angles. Okay, based on the angles, if we decide based on the angles, the triangle has also three types. Sides के basis पे भी three types थे और angles के basis पे भी three types थे। Clear? तो वो types कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि और जो ट्रायंगल होता है उसके थ्री एंगल्स होते हैं। ओके, इट हैज थ्री एंगल्स, बट द वन एंगल, इफ द वन एंगल is right angle, right angle, that means 90 degree measurement, then it is a right angle triangle. Right angle triangle, like this. Okay, if the one of the three angles is right angle, it means 90 degree angle, then it is called right angle triangle. Right angle triangle. Okay, any doubt? Next one is, देखो 90 डिग्री को हम कैसे शो करते हैं, for this symbol. Any one angle is 90 degree. Any one angle is 90 degree. Now the two remaining types are, second is acute angle triangle. Acute angle triangle. If the one angle is acute angle in a triangle, then it is known as acute angle triangle. वन हो तो भी वो एक्यूट होगा, अगर तीनों भी एक्यूट हैं दैट मींस वो भी क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, क्लियर? फॉर दिस, फॉर एग्जांपल दिस, all three acute angles, okay, all three are acute angles, okay, all three are acute angles, then it is called acute angle triangle. Acute angle, that means less than 90, ये भी less than 90, ये भी less than 90 और ये भी less than 90. Next one, all the three angles are less than 90. अगर तीनों ही एंगल जो है वो less than 90 है तो हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। देखो वन होगा, वन अगर एक्यूट एंगल है तो वो एक्यूट ट्रायंगल हो सकता है, बट अगर उसमें से एक भी ऑब्ट्यूज हुआ तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल नहीं रहेगा। इट मींस ऑल थ्री आर कंपल्सरी टू बी एक्यूट, all three are compulsory to be acute. Okay, next one, obtuse angle triangle. Obtuse angle triangle, clear? देख लो इसमें, if one angle is obtuse angle, if one angle is obtuse angle, then it is known as obtuse angle triangle. अब मैं जो बात कर रहा था ऊपर वाले में कि अगर एक भी obtuse हुआ और बाकी दोनों acute है तो ये acute angle triangle नहीं होगा, ये क्या होगा, obtuse angle triangle. Clear? तो it means फर्स्ट वाले में 190 डिग्री होना चाहिए तो राइट एंगल ट्रायंगल, सेकंड वाले में तीनों ही एक्यूट होने चाहिए तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और इसमें क्या है कि एक ऑब्ट्यूस होगा तो ये क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे फिगर्स हो सकते हैं. नेक्स्ट वन इज any one angle is more than 90. Obtuse angle, that means more than 90. Next one, properties of triangle. Now we have to discuss about the properties of triangle. Okay, properties of triangles में सबसे पहले angle sum property. Angle sum property, it means you know that any triangle has three angles and the sum of three angles should be equals to 180 degree.
Okay, and it is always equals to 180 degree. Clear? So sum of three angles of a triangle is 180 degree. It is the first property of triangle. Clear? देखो triangle में सबसे पहले आया था. It has three sides closed figure है ये. Second, three angles. It has three angles. Clear? And it has three vertices. And the sum of three angles should be is equals to the 180 degree. Is equals to the 180 degree. It means if we see this figure, it has three angles: angle A, angle B, and angle C. Okay, angle A, angle B, and angle C. Angle C, and the angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree. 180 degree. Clear? अब देखो इसको चेक करने के लिए you can do an activity at your home. Okay. First of all, you have to make a triangle with the help of a paper. Okay. आप क्या कीजिए एक पेपर पे एक ट्रायंगल बनाइए और उस ट्रायंगल को सीजर्स की हेल्प से सेफ्टी सीजर की हेल्प से कट करना है. क्लियर? इस तरीके की शेप आएगी कुछ. अब आपने क्या करना है इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना है. इक्वल इज नॉट नेसेसरी. वन कट यहां पर लगाइए, इससे ये एंगल हो जाएगा अलग. वन कट, अब जो बचा हुआ पार्ट है उसमें एक कट यहां लगाइए तो ये दोनों पार्ट अलग हो जाएंगे. जब तीनों एंगल्स को आप एक ही पॉइंट पे मिलाओगे then it is a figure that make a 180 degree angle. That make a 180 degree angle. Clear? For example, 1 minute. Yes, it is a triangle. Okay, it is a triangle. Paper cutting triangle हो गया. Okay, अब हम इसको क्या करेंगे, इसके 3 इक्वल पार्ट्स कट कर लेंगे. ओके, फर्स्ट मैंने यहां से इसको कट कर दिया. ठीक है, ये एंगल अलग हो गया. क्लियर? और सेकंड मैंने यहां से कट कर दिया. क्लियर? इसका ये एंगल अलग हो गया और ये वाला एंगल अलग हो गया. अब तीनों एंगल्स को जब मैं एक ही उसके ऊपर रिप्रेजेंट करूंगा तो आप देख सकते हो, ये देखो मैंने तीनों एंगल्स को एक ही वर्टेक्स पे रिप्रेजेंट कर दिया. क्लियर? तो एक मिनट. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा. तो इट इज अ 180 डिग्री एंगल. एक स्ट्रेट लाइन बनेगी तीनों एंगल से. तीनों एंगल से क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. देखो ये दो एंगल मैंने मिला दिए और ये तीसरा एंगल ये हो गया, तो तीनों मिलाकर के एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं. तो इट मींस द सम ऑफ थ्री एंगल्स शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो आप ये एक्टिविटी घर पे कर सकते हो. क्लियर? नेक्स्ट वन इज second property is exterior angle. Exterior angle is equals to the sum of two interior opposite angles. Okay, first of all we have to discuss about the exterior angles. Exterior angle क्या होता है? Okay, तो इसके लिए मैं सिंपल सी फिगर यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ. Suppose we have a triangle. Okay, and it has three sides. It has three sides. Here 1, 2, and 3, and it has three angles: angle A, angle B, angle C. Angle A, angle B, and angle C. Okay, and these three are the interior angles. These three are the interior angles. Clear? Now we have to draw an exterior angle. An exterior angle. Exterior angle अपने कैसे ड्रॉ करेंगे? Any side increase by any point. Okay, एक कोई भी साइड को एक थोड़ा सा आगे इंक्रीज कर लीजिए. Then the angle mean between this increasing side and the other side of a triangle, this angle is the exterior angle. If we do according to this, अगर हम इसको आगे की तरफ इंक्रीज कर देंगे, then this angle is exterior angle. अगर हम इसको आगे की तरफ इंक्रीज कर देंगे
then this angle is exterior angle. क्लियर? इसी तरीके से आप चाहो तो सेकंड साइड पे देखो, ये सारे कहां बन रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहे हैं। अब हम चाहे तो क्लॉकवाइज भी बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल दिस। क्लियर? ये हो गया एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। क्लियर? इंटीरियर एंगल्स आर this and the exterior angle according to this। पहले हमने इस लाइन को इंक्रीज किया था, अब हम AC को इंक्रीज करेंगे नीचे की साइड। ओके, देन दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल। अब हमने यहां पर इंक्रीज किया था AC को अप साइड, अब हम AB को इंक्रीज करेंगे इस साइड। दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल। यहां पर हमने इंक्रीज किया था AB को, अब हम इंक्रीज करेंगे BC को। ओके, देन दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल। तो ये हो गया क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से ये सभी क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल। ओके, एंड इफ वन साइड इंक्रीज बाय सम पॉइंट एंड द एंगल बिटवीन दिस इंक्रीजिंग साइड एंड द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल। ओके, देन द स्टेटमेंट इज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब इसका मतलब क्या है, इसके लिए मैं फिगर्स देखते हैं कुछ। फॉर एग्जांपल दिस ट्रायंगल, it has three angles A, B and C. It has three angles, angle A, angle B and angle C. Okay, and the exterior angle, by increasing the AB side, then this angle is exterior angle, this angle is exterior angle. Okay, then the sum of okay, इनको मैं नहीं देता हूँ। exterior angle is equals to 1, interior angle A is equals to 2, interior angle C is equals to 3. Then the sum of 2 plus 3, the sum of angle 2 and 3 is equals to 1. अब ये देखो ये कैसे है, ठीक है? हम कैसे पहचानेंगे कि अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, ठीक है? एक्सटीरियर एंगल इज दिस, एक्सटीरियर एंगल इज दिस। ओके, नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब ये हम कैसे करेंगे? देखो ये जो वन एंगल जो एक्सटीरियर एंगल यहां पर बन रहा है, ओके, तो यहां पर एक एडजेसेंट एंगल भी बन रहा है, एक एडजेसेंट एंगल भी बन रहा है, ये रहा, ये एडजेसेंट एंगल है इसका। ओके, तो जो भी एक्सटीरियर एंगल है उसका इंटीरियर एडजेसेंट एंगल आप छोड़ दीजिए। ओके, जैसे ही आप इस एंगल को छोड़ेंगे तो रिमेनिंग टू आर द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? दोबारा देखो, यानी इसके बिल्कुल नेबरहुड जो एंगल है वन की, यानी एक्सटीरियर एंगल जो नेबरहुड एंगल है उसको छोड़ दीजिए, then the remaining two are the opposite interior angles to the angle 1. Then the sum of these two angles should be equals to 1. We can also prove this by the help of parallel lines and their transfers. Okay, तो हम वो बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर? एनी डाउट? अभी जरूरी नहीं है इंटीरियर एंगल नहीं कुछ बनेगा, एक्सटीरियर एंगल नहीं कुछ बनेगा। If we draw another type of triangle like this, clear? Then the exterior angle, if we draw here, angle A, angle B, and angle C. Now we draw exterior angle, this. Okay, this angle is the exterior angle, that is 1. Clear? And the two interior opposite angles, So then the neighbor angle is this C. We have to left this angle and we have to consider here angle A and angle B. If we draw 2 and 3, then the angle 2 plus angle 3 is equals to angle 1. Clear? इसी तरीके से आप सभी एक्सटीरियर एंगल्स के लिए इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। Any doubt? Next one is another properties like this, sides of a triangle. Okay, now the sides of the triangle, देखो जो हम डिस्कस कर रहे हैं, it is the complete basic of this chapter, complete chapter. Okay, मतलब ये only 6.1 का नहीं है, ये complete exercise का basics है, तो इसमें हम सभी डिस्कस करेंगे। Clear? Now the sides of a triangle. अब sides of a triangle के बेसिस पे क्या प्रॉपर्टी होगी? Sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. हम कोई भी दो साइड लेंगे ट्रायंगल की,
तो वो क्या होगा, उसका सम जो होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड. लेट मी सी. For example, in this figure, okay, we have three angles: angle A, angle B, and angle C, and we have three sides: AB, BC, and AC. AB, BC, and AC. And the sum of any two sides, like this AB plus BC should be, or it is always greater than, third side. Okay, and it will किसी भी दो साइड्स का सम जो होगा वो थर्ड साइड पे से क्या होगा, ज्यादा. क्लियर. तो हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो सभी पॉइंट्स के लिए होगा AB plus AC ले लो तो it should be greater than BC. Okay, next one, BC plus AC ले लो and it is always greater than AB. कोई भी दो साइड्स का आप सम ले लीजिए, इन दो का लेकर के ये थर्ड साइड से होगा, मतलब ग्रेटर देन होगा, इन दोनों का साइड्स का होगा तो ये अलग होगा. तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ वी ड्रॉ अ ट्रायंगल, like this, okay, and it has three sides like 3 centimeter, 4 centimeter, and 5 centimeter. It has three sides: 3 centimeter, 4 centimeter, and 5 centimeter. Now the sum of any two like this. Now पहले इनको नेम क्लियर कर देते हैं: एंगल A, एंगल B, and एंगल C. अब हम क्या बोल रहे हैं? AB plus BC should be greater than AC. Okay, AB plus BC. AB plus BC क्या हुआ? 5 plus 3. Okay, is equals to 8. 3 किससे ज्यादा होना चाहिए? थर्ड साइड से. तो AB plus BC should be greater than AC. तो AC की मेजरमेंट क्या है? 4. तो आपको पता ही है 4 is less than 8, it means 8 is greater than 4. It means इन दोनों का सम हमेशा ही ज्यादा होगा. कोई भी सॉल्व कर लीजिए. अब अगर हम इन दोनों का सम करें तो 4 plus 3 is equals to 7. Okay, 4 plus 3 is equals to 7 and 7 greater than 5. इन दोनों का सम कर लीजिए. 4 plus 5 is equals to 9 and 9 is greater than 3. 9 is greater than 3. Clear? Next one. Next one is this. More about the triangles. Clear? तो देख लेते हैं क्या चीज है. More about the triangles. Yeah. Properties of isosceles triangle. Now we have to discuss about a particular triangle, that is isosceles triangle, and we have to discuss the properties of isosceles triangles. Okay, तो isosceles triangle की properties को read करने के लिए, for example this. Okay, in an isosceles triangle, two sides are equal, then the angles of opposite to the equal sides are also equal. अगर किसी isosceles triangle की बात करेंगे तो it has two equal sides and the opposite of two equal sides angles are should be equal. ठीक है, हाँ, should be equal. For example, here trace the triangle on a paper, press to get a crease. Okay, unfold the paper along the line segment AD, maintain BC in D. Okay, and next is this. अगर हम एक कोई भी पेपर ले लें और उसके ऊपर एक ट्रेस कर लेते हैं ट्रायंगल को, और उस ट्रायंगल का कोई भी मेजरमेंट ले लिया आपने, फॉर एग्जांपल 4 4 5, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो दीस आर 4 4 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू ड्रॉ अ AD. ओके, 9 सेंटीमीटर. देखो इसको हमने क्या करना है, बीच में से फोल्ड कर लेना है. जैसे हमने पेपर पे ट्रेस किया उसको बीच में से फोल्ड कर लेना, तो उससे हमें एक क्रीज मिल जाएगी और क्रीज ए पॉइंट से जहां पर मैच होगी उस पॉइंट को हम डी देंगे. क्लियर? और डी देंगे तो एंगल सी कवर्स एंगल एबी एक्जेक्टली टू सॉल्व दैट. ओके, हम क्या करेंगे, अगर दोनों एंगल इक्वल हैं, जैसे हम इस क्रीज को ऐसे मिलाएंगे तो एंगल सी जो होगा वो एबी को एक्जेक्टली क्या कर लेगा, कवर कर लेगा. यानी ये लाइन इस पे आ जाएगी और ये हाफ लाइन इस हाफ लाइन पे आ जाएगी. ओके, तो इट मींस these two angles are equal.
ये एंगल इसको कंप्लीटली कवर कर रहा है, इसका मतलब दोनों का मेजरमेंट क्या है, सेम। क्लियर? तो वी कैन प्रूव दिस विद दिस एक्टिविटी। अगर ये 55 है तो ये भी 55 है फॉर एग्जांपल। ओके, दोबारा देख लो। अगर भी है अगर हमारे पास कोई भी आइसोस्केल ट्रायंगल है, आइसोस्केल ट्रायंगल, देन इट हैज टू इक्वल साइड्स एंड द अपोजिट ऑफ टू इक्वल साइड्स। अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इसके अपोजिट ये होगा और इसके अपोजिट ये होगा। ठीक है, मतलब इसके सामने जो वर्टेक्स होगा उस पे जो एंगल क्रिएट होगा, इसके जस्ट सामने कौन सा वर्टेक्स है? बी। और बी के ऊपर क्या क्रिएट हो रहा है? बी के ऊपर 55 डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा है। और AC की बात कर, AB की बात करें तो 84 सेंटीमीटर है, उसके जस्ट सामने कौन सा वर्टेक्स है? C, और इस पे 55 डिग्री एंगल क्रिएट होगा। इट मींस these two angles are, it is the property of isosceles triangle, यानी जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है उसकी अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? दोनों इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, these are equal. Okay, these are equal. Next one. ठीक है, सिमिलरली इन अ ट्रायंगल इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन द साइड ऑफ अपोजिट दीस एंगल्स आर आल्सो इक्वल। इसका मतलब क्या है? इसके लिए मैं ड्रॉ करके फिगर बताता हूं। जैसे मैंने अभी बोला था, कि अगर दो साइड्स इक्वल है किसी भी ट्रायंगल, ठीक है, तो आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया, तो उसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इसका जस्ट अपोजिट भी वर्क करता है, इसका जस्ट अपोजिट भी वर्क करता है, स्टेटमेंट का जस्ट अपोजिट। हमने पहले साइड्स की बात की, दो इक्वल साइड्स की, और उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो अब हम उल्टा चलते हैं। अगर हमारे पास टू इक्वल एंगल्स हैं, इफ वी हैव टू इक्वल एंगल्स, देन द अपोजिट साइड्स ऑफ दीस टू इक्वल एंगल्स शुड बी इक्वल। अगर यहाँ पर एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर है, वो एंगल C के बराबर है, तो इट मींस एंगल B के अपोजिट क्या होगा? AC साइड, और एंगल C के अपोजिट क्या होगा? AB साइड। Then these two sides are equal. These two sides are equal. Clear? Next one. Next one, Pythagoras theorem. It is the most important theorem that you will use in your higher classes. Okay? Or many of daily life problem can be solved with the help of this Pythagoras theorem. So read it completely with carefully. Okay? For example, here we have a triangle, that is right angle triangle. हमारे पास यहाँ पर एक right angle triangle है जिसके अंदर we have AB side is equals to 3 centimeter, BC side is equals to 4 centimeter, and AC side is equals to 5 centimeter. Clear? And the angles B is equals to 90. Angle B is equals to 90. Clear? तो अब मैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि हमारे पास इसके अंदर तीन चीजें होती है। ठीक है, थ्री थिंग्स होती है। वो क्या क्या चीज होती है? ओके, एक तो राइट एंगल होता है। ठीक है, तो राइट एंगल की थ्री साइड्स के अकॉर्डिंग इनके तीन नाम। राइट एंगल ट्रायंगल में थ्री साइड्स हैं। एक तो राइट एंगल के जस्ट अपोजिट दिस साइड, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? याद रह जाएगा, हाइपोटेनस। राइट एंगल के जस्ट अपोजिट जो होगा वो हाइपोटेनस होता है। ठीक है, इट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेनस हमेशा जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट आर्म होता है। क्लियर? ये लॉन्गेस्ट साइड होता है। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास आता है राइट एंगल हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्या? परपेंडिकुलर और बेस। दो साइड्स के नाम होते हैं परपेंडिकुलर और बेस। इसमें से एक साइड परपेंडिकुलर होगी और एक बेस होगा। तो परपेंडिकुलर यहां से नीचे दिख रहा है P और बेस, ओके, इट इज परपेंडिकुलर बेस। राइट एंगल की जो दोनों साइड्स हैं, जिन दो साइड से मिलकर वो बना है, उसमें से एक परपेंडिकुलर होगा और एक बेस होगा। और राइट एंगल के जस्ट अपोजिट जो होगा वो होगा हाइपोटेनस। क्लियर? तो परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस, वी हैव थ्री साइड्स। ओके, तो ये परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो ऐसे ही एक्चुअली एंगल से डिसाइड होता है कि अगर हम ये एंगल हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है तो एंगल के जस्ट अपोजिट ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। और अगर ये एंगल गिवन होता तो ये परपेंडिकुलर होता है एंगल के जस्ट सामने वाला और ये बेस। अब वो आपके हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आप इतना ही ध्यान रखिए
and right angle is the supposed hypotenuse. Okay, and the two sides that make a right angle, these are perpendicular and base. Perpendicular and base. Now the height, Pythagoras theorem is क्या होती है देख लेते हैं. Pythagoras theorem is in the right angle, the square of right angle triangle in a right angle triangle, the square of the hypotenuse, मैंने hypotenuse कौन सा था, the square of the hypotenuse equals to the sum of the square of its side. Okay, मतलब जो hypotenuse का square होता है वो किसके इक्वल होता है, जो बची हुई दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. देख लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल दिस. ओके, द हाइपोटेन्यूज इज AC square is equals to sum of the square AB and BC, sum of the square of AB and BC, AB square plus BC square, क्योंकि AC के अलावा कौन सी साइड बचती है, AB और BC. तो देख सकते हो, आप इसके चेक कर सकते हो, यू कैन चेक हियर. ओके, तो इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं. इसमें ये कंपल्सरी नहीं है LHS हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा और ये दोनों साइड्स RHS नहीं होगी. हम इसको अपोजिट लिख